Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in the earlier video of the economics for engineering, we have discussed about the probability. So continuing to that, this is our lecture 13 and in this video basically this will be your probability part 2. Okay. So in this video basically we will be going to discuss about the various important concepts such as the flow diagram, what is the simulation and other important things. Besides that, we will do some numerical question on the basis of probability. Okay. So this video gonna very important for you guys. Okay. So before moving to the video guys, if you are new here to my channel, support for getting such informative content, and if you haven't joined our Telegram group, you can join there. I am sharing notes there too. Okay, not only of the economic subject but other subject too. So let me start the video without wasting our time guys. So uncertainty in future event. Okay, so in the earlier video we have already discussed about the probability concept. That probability means uncertainty of happening anything. Okay, so let me come to our next important things, that is the economic decision tree. So what is actually economic decision tree? So economic decision tree is basically a systematic tree-shaped diagram used to determine the course of action or show the statistical probability. Okay. So basically economic decision tree क्या होता है? Diagram होता है. Okay. Or you can say a tree which represent the course of action or show of statistical probability. Means probability का flow भाई क्या होगा? That we will show using the economic decision tree. Okay. Means basically tree which used to represent the economic decisions. Okay. That is very important. Okay, and a particular company basically guys, economic decision tree play a very important role. Okay, in context to basically taking a particular decision. Okay, so by economic decision tree को क्या होता है? एक efficient way of showing the economic decision. Okay, you can say that each branch of the decision tree represent a possible decision, occurrence or reaction. Okay, and the tree is basically structured to show how and why one choice may lead to the next. मीन्स बेसिकली ये बताता है कि एक डिसीजन अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन लेंगे देन व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, और बेसिकली हाउ द व्हाट विल द फ्लो ऑफ डिसीजन, दैट बेसिकली इकोनॉमिक डिसीजन ट्री शो. ओके, सो आई होप क्लियर दैट व्हाट इज इकोनॉमिक डिसीजन ट्री. ओके, नथिंग बट जस्ट इट इज अ सिस्टमेटिक ट्री शेप डायग्राम यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कोर्स ऑफ एक्शन थ्रू टू शो अ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी. ओके, सो दिस इज द कवर इकोनॉमिक डिसीजन ट्री. ओके, let me come to one example. After that it will be much clear that what are the action, basically which decision you have to take, you have to basically analyze. Okay, so let me come to the example. So suppose guys a company has three option R1, R2, R3. Okay, so company के पास में तीन option है R1, R2, R3. Cost, okay, for R1 cost is 10,000 for and gross return is 26,000 and probability of success is 90%. Similarly R2 is what? Cost equal to 6,000, gross return is 24,000, probability of success is 60%. R3 is company can pay up to rupees 5,000 and get a gross return of rupees 20,000. Okay, so these are the basically various options basically available. Okay, और रियल लाइफ में देखेंगे गाइस तो कंपनी के पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है. ओके, नाउ हाउ द कंपनी विल डिसाइड. ओके, और आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? दैट सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन. मींस व्हाट विल द गुड ऑप्शन फॉर अ कंपनी सो दैट ही विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी हैव बेसिकली जनरल टाइप्स ऑफ मैनेजर एंड अदर इंपॉर्टेंट basically people. They are basically analyze all that things. Okay, they will basically analyze all the possible things by making economic decision tree, and after that they will take the action that I have to follow this path. Okay, let me come to the solution guys. So this is the basically economic decision tree of representation. Okay, so new investment. Okay, suppose company going to do new investment, then R1, R2, R3. Okay, for R3 20,000 minus 5,000. Okay, and similarly R1 basically further divided into S and F. Okay, so भाई एस से एफ में अगर करते हैं क्या 26,000 माइनस 10,000. ओके, और बेसिकली दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट 0.9. ऑल प्रोबेबिलिटी दे हैव गिवन एंड दिस इज 0.1, दिस इज 0.6, 0.4. ओके, सो व्हाट विल द बेस्ट थिंग्स. ओके, बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू दैट दे विल टेक दैट, या जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा देन दे विल टेक दैट. ओके, सो जहां भी भाई प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा कंपनी विल टेक डिसीजन. ओके, और बेसिकली कंपनी विल फॉलो दैट पाथ. So friends, we have to basically here select the best option. Okay, and this is the diagram basically will be given in your question too. Okay, आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा. Okay, and basically first of all अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा then you have to make the decision tree. Okay, and after that it will come to the solution. Okay, so expected value of R1 will be what 26,000 minus 10,000 into 0.9. 0.9 what? Why? Because 0.9 percentage, you can say 90% they have given. Okay, so probability कितना होगा भाई 0.9 plus minus 1,000 into 0.1 means 1,000 means 0.1 क्यों किया भाई? क्योंकि 10% चांस है दैट यार दे विल गेट लॉस. ओके, लॉस ऑफ व्हाट 10,000. दे ऑलरेडी सेड दैट दे विल गेट द लॉस ऑफ यू कैन से कॉस्ट 10,000 पे हो सकता है लॉस हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी हैव डन. ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट द वैल्यू 13,400. ओके, सिमिलरली आप करेंगे R2, R3 के लिए देन यू विल गेट द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग. ओके, सो विच विल द बेस्ट ऑप्शन, द ऑप्शन और बेसिकली द पाथ विच विल गिव द बेस्ट आउटपुट. ओके, बेस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसमें ज्यादा आ रहा है भाई? R3. सो वी विल चूज द R3. ओके, सो हेंस R3 इज द बेस्ट ऑप्शन. I hope clear. Let me come to the next example that what is the optimal height of a dam if these are the value they have given. Okay, means क्वेश्चन में क्या करा भाई? What is the optimum height of dam?
ऑप्टिमम हाइट ऑफ डैम क्या होगा, ओके, इफ दे हैव गिवन द फॉलोइंग डिसीजन ट्री, ओके, सो डैम हाइट फॉर 0 फीट कॉस्ट कितना है, 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लड 0.25 एंड लॉस फ्रॉम फ्लड इज 8 लाख अप्रोक्स, ओके। सिमिलरली डैम हाइट अगर 20 रहा देन कॉस्ट ऑफ डैम इज अबाउट दिस 7 लाख, ओके, एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लड 0.05, loss from flood is 5 lakh. Now if the dam height is 30,000 then this value they have given, okay. If the dam height is 40,000 then cost of dam will be 9 lakh, probability of flood 0.002 and loss from flood is 2 lakh, okay. So basically these are the value they will provide in the question. Now you have to take the decision, okay. You have to means basically a manager will take decision, but as a student since you are solving this question then you have to analyze all the possible path, और जो भी path वही बढ़िया रहेगा you have to basically follow that path, okay, or you can say you have to choose that height, okay. So let me come to the solution. After that, it will be clear. So expected loss from 0 height, okay, means if the height is 0, so what will the expected loss? So expected loss will be what? 8 lakh into 0.25 means simply भाई आपको probability से multiply करेंगे, means जो भी flood होने का chance है, just you have to multiply that, you will get the value something this. Similarly expected loss from 20 height, okay, so 20 height अगर रहेगा डैम then what will the loss? 7 lakh plus 5 lakh into 0.5, okay, means 7 लाख तो भाई कॉस्ट लगेगा ही, प्लस क्या होगा जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लड है एंड लॉस को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा सिंपली यू हैव टू ऐड दैट, ओके। सिमिलरली 8 लाख प्लस 0.01 इनटू दिस एंड सिमिलरली 9 लाख प्लस 0.002 इनटू दिस. सो व्हेन यू विल डू द कैलकुलेशन देन यू विल गेट द वैल्यू, ओके, करस्पॉन्डिंग टू दैट, जिसमें भाई वैल्यू मैक्सिमम आएगा, ओके, और बेसिकली जिसमें मैक्सिमम आएगा मीन्स व्हाट आपका लॉस इंक्रीज हो रहा है, ओके. सो बट यू विल चूज विच ऑप्शन वेयर योर लॉस विल बी मिनिमम, ओके. तो जहां भी भाई लॉस मिनिमम रहेगा यू हैव टू सिलेक्ट दैट पाथ, ओके. सो सिंस वी आर गेटिंग मिनिमम लॉस इन फ्रॉम हाइट 0 देन सो कंपनी विल बेसिकली चूज द हाइट 0, ओके, और यू कैन से ऑप्शन ए इज द बेस्ट, ओके. दिस ऑप्शन इज द बेस्ट क्योंकि लॉस भाई कम है, ओके. रिमेंबर गाइस आपको ये ध्यान रखना है लॉस कहाँ लेंगे गेन कहाँ लेंगे, ओके. व्हेन द कंपनी वांट गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट देन दे विल कंसीडर मैक्सिमम वैल्यू, बट इफ देयर इज बेसिकली चांस ऑफ गेटिंग लॉस, ओके, सो लॉस में जिसमें कम आएगा दैट वी विल सिलेक्ट, ओके. सो बी केयरफुल इन चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन. लेट मी कम टू अनदर एग्जांपल. Example 4. In a manufacturing process, there are two parts. In part 1, 9 out of 100 will be defected, and in part 2, 5 out of 100 will be defected. So what is the probability that the assembled article will not be defected? Simply a simple way probability का question है. I think that you can solve this, okay. But let me come to the solution, okay. So let a part 1 is not defected, then not defective is what? Already मैं बताया था कि probability of happening plus not happening equal to what? 1. So probability of not happening is what? 1 minus whatever the probability that they have given. So not defective का क्या है? 1 minus 9 upon 100. So you will get the value 91 upon 100. Similarly part 2 is not defective. Okay. So B अगर मान लिया part 2 अगर not defective then its probability will be what? 95 upon 100. How will got 95? Because 5 out of 100 क्या है भाई? Defective है. Means not defective कितना होगा? तो 95. Means 100 में अगर 5 बॉल भाई defective है then 95 बॉल not defective होगा. Okay. So similarly you can get the probability. Okay. Now what the question they are asking that what is the probability that assembled article will not be defective? Assembled article will not defective means दोनों को combine करके भाई क्या probability की not defective हो. So simply you have to do the intersection of probability of A B, okay. So probability of A B का intersection लेंगे that is the probability of A into B, okay. आप ये formula भी याद होगा A intersection B के लिए क्या कहते हैं A into B. Similarly A union B means what? A plus B. So these are the some basic formula of the basically probability. I think that you have already gone through in class 9 10, okay. So simply you have to do the multiplication and you will get the value that is the 0.8645 का, okay. So इस तरह का भाई क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, so be careful. Let me come to the next example, that is the example 5, and basically this is the question I will give you in the homework, okay. So box 1 basically contains 6 white ball, 4 black ball, and box 2 contains 5 white and 5 black ball, okay. Box is selected at random and a ball is selected from the box. So for box 1 a person receive rupees 1 and for box 2 a person rupees 2, okay. Then what is the basically for white ball person pay rupees 5 and for black ball he get rupees 8. तो find the expected gain means basically expected gain क्या होगा, okay. सबसे पहले क्वेश्चन समझिए क्या है क्वेश्चन करना चाह रहा है, okay. So there are basically they have said that there are two box, okay. Box 1 there are two box 1 and box 2, okay. So this will be the box 1 and this will be the box 2. So box 1 contain what? 6, okay. So 6 white ball, 4 black ball box 1 contain कर रहा है and box 2 will basically contain 5 white ball and 5 black ball, okay. So what is the means box is selected at random and ball is selected from a box. So for box 1 person receive rupees 1 and for box 2 person pay rupees 2 means अगर box 1 में selected करेगा then he will receive 1. If he selected box 2 then he will pay the rupees 2, okay. So for white ball person pay rupees 5 and for black ball
he will basically get ₹8. So find the expected gain. Okay, so expected gain क्या होगा, you have to basically calculate. So simple है guys, आपको simply ये formula आप लिख सकते हैं. Okay, and I think that you can analyze that. Okay, but let me basically go to the solution. Okay, क्योंकि मुझे पता है आप लोग घर में करेंगे नहीं. Okay, so probability of selecting box 1 and white ball is equal to what, 1/2 into 6/10. And मैं बार बार कर रहा हूँ, जब and आ रहा means what, multiply. If or is coming then you have to basically do the addition. Okay, so probability of selecting box 1 and white ball is what, 1/2 into 6/10. Why 1/2? Because 2 out of 1 ball and 6 out of 10 ball. Okay, so similarly the return from this situation will be -4. Okay, so probability of selecting box 2 and white ball is what, 1/2 into 5/100. So simply we get the value 0.25, 0.2, 0.25 and 0.35. Okay, तो सिंपली भाई आपको सबको मीन्स एनालाइज करना है एंड यू हैव टू बेसिकली गेट द वैल्यू. ओके, सो आई होप आपको हिंट मैंने बहुत दे दिया एंड गो थ्रू दिट. आई थिंक दैट दिस इज द क्लास 9-10 क्वेश्चन है. ओके, बहुत ईजी है. आई थिंक यू कैन सॉल्व दैट. ओके, बट स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू आस्क अस. ओके, let me come to the next example, that is the example 6. Okay, and again this is the basically your homework. Okay, so firm identify 3 potential investment option from an investment of $1 million. The possible outcome of their gross return and associated probability are this. Okay, so possible outcome भाई gross return भाई दिया है. Okay, means consultants prediction क्या है भाई, AC का A का 0.8, B का 0.1, C का 0.1. means simply they have given the probability. Similarly BC, okay, means consultant of BC probability दिया गया है guys for A 0.1, 0.9 and 0.2. Okay, means occurrence of state, क्या possibility occurrence of state. Okay, and other value they have given that the A is $14,000. Okay, P equal to 0.2, B equal to 12 for this. Okay, and additionally a consultant has been hired to predict the outcome. So associated probability are as follow. Construct a decision tree and find the expected value as per prediction. Okay, means simply by guys you have to construct a decision tree. आपको एक decision tree बनाना है. मैं ऑलरेडी बताया किस तरह से decision tree बनाएंगे, एक relate करके. Okay, first of all take the AC and according to that formulate that. Okay, means according to probability A का इतना, B का इतना, C का इतना. Similarly for BC, A this and whatever the value. Okay, means in which whatever the path you will get the good value or you can say maximum value, that will be your solution. So I hope clear. Okay, but इतना कोई means इस तरह से decision tree बनाना बहुत कम ही क्वेश्चन आता है. Okay, but try to practice more number question. Okay, let me come to the last very important topic, that is the simulation. Again guys, very important in context to your final semester exam. Okay, so let me come to the concept. What is simulation? So simulation is basically approach taken is to model the behavior of individual element within the system. Means it is the basically model to get the behavior of individual elements. means बहुत सारा अगर कोई एक सिस्टम में एलिमेंट है, बेसिकली आप कह सकते हैं कंपनी बहुत सारा अगर एलिमेंट है तो ईच एलिमेंट का बिहेवियर निकालने के लिए we basically apply the concept of simulation. Okay, the overall behavior of system emerge from the interaction between the element. Okay, simulation process basically consists of problem definition, conceptual modeling, data collection, model coding, model verification and validation, experimentation and analysis of result and solution implementation. means simulation process में भाई एक बहुत सारा number of process contain करता है. आप कह सकते हैं problem definition, conceptual modeling, data collection, model coding, model verification. आप सिर्फ एग्जाम में ज़्यादा आपको मीन्स डिटेल में नहीं पूछेगा simulation, but just they will ask what is simulation. Okay, or basically what are the process that involved in simulation. तो simply आपको बोलना है conceptual modeling, data collection, model coding, model verification and validation. Okay, another you can get. And what is the basically application area of simulation? So application area of simulation in industry include logistic, supply chain, service, operations, management, business process improvement, health एंड सोशल केयर एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्वायरमेंट एंड मेनी मोर. एंड आप कह सकते हैं सिमुलेशन का भाई ओवरऑल इंडस्ट्री में हर एक जगह लगभग यूज होता है. ओके, तो सिंपली सिमुलेशन का ऐसे बेसिकली बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, बट इफ दे विल आस्क देम दे में जस्ट आस्क इन अ short question. Okay, or 1 or 2 marks, that what is simulation or what are the various process involved in simulation or what is the basically application of simulation. Okay, so I think that you will get clear cut idea of this. Okay, nothing, सिर्फ आपको बोलना है simulation is what, it is a approach taken to model the behavior of individual element within the system. Okay, so basically we'll get the idea of each element in a system, that is basically called simulation. Simulation में various process involved रहता है, such as the conceptual modeling, data collection, model coding, model verification and validation. Okay, and what is the application area? So application area भाई बहुत vast है. Service, operation management, business process improvement. Okay, health and science and other important department में भाई इसका use है. Okay, so I hope clear. Let me come to the last very important, that is the Monte Carlo simulation. ये guys थोड़ा important है. Okay, and at most basically 1 or 2 questions may came. Okay, मीन्स ओवरऑल सिमुलेशन से आपका 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है. ओके, एक शॉर्ट क्वेश्चन आने का ज़्यादा ही चांस है. ओके, लेट मी कम टू द मोंटी कार्लो सिमुलेशन. व्हाट इज दिस?
So Monte Carlo simulation perform risk analysis by building model of possible result of substituting a range of value. Okay, और बेसिकली Monte Carlo simulation में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पॉसिबिलिटी रिस्क एनालिसिस करते हैं, एंड आफ्टर दैट बेसिकली you will calculate or basically company will calculate the result. Okay, means various risk analysis कर लिए and according to that they will calculate the result. Okay, if then calculate the result over and over, okay, each time again using different set of random values from the probability function. means एक अगर probability function में है उससे various important combination करके value लेते हैं. okay, और जो भी वही बेस्ट वे रहता है, okay, they will basically go through that path. okay, so similar कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि decision tree से है. okay, similarly, depending upon the number of uncertainties in the range specified for them, Monte Carlo simulation could involve 10,000 of recalculation before it complete. Okay, so Monte Carlo basically simulation produces distribution of possible outcome value. Okay, so Monte Carlo simulation में क्या होता है, various possible value आप कह सकते हैं कि various प्रोबेबिलिटी लेते हैं फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ओके, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आपको पता है कि बहुत सारा प्रोबेबिलिटी रहता है. सो कोई भी 2-3 कॉम्बिनेशन लेते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी एनालाइज द पाथ, एंड इफ पाथ इज गुड और यू कैन से इकोनॉमिकली वायबल देन दे विल सिलेक्ट दैट पाथ. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट अबाउट द Monte Carlo distribution. ओके, और यू कैन से Monte Carlo simulation. So guys, this is the complete lecture of our probability and thus our probability concept important. अगेन गाइज मैं बोल रहा हूँ सिमुलेशन कोई खास नहीं होगा, बट 1 या 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है. मेन इंपॉर्टेंट इन टूडे लेक्चर इज सम एग्जांपल दैट वी हैव गॉन थ्रू, दैट इज द प्रोबेबिलिटी. ओके, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज ये है. ओके, दैट इज द रेड बॉल एंड व्हाइट बॉल. ओके, अगेन एक दो क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं आते रहता है. ओके, दिस एग्जांपल 5. ओके, सो ट्राई टू सॉल्व विद योर आर्म. आई हैव ऑलरेडी गिवन हिंट 2. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट एंड इकोनॉमिक डिसीजन ट्री गाइज, बी केयरफुल. ओके, इकोनॉमिक डिसीजन ट्री भी आता है. ओके, so this is the overall of today lecture. I hope informative to you. If you find doubt related to anything, feel free to ask here guys. And again saying guys, support us, okay, and share this video with more number of students so that we can reach and we can help more number of students. Thank you.